Good afternoon to all the students. Today we will start exercise 11.2, second exercise of chapter 11, area and perimeter. And questions, some figures are given of part 1. You have to find the area of parallelogram in this first question. These are the given figures and you have to find the area of the parallelograms of the given figure. Look at the first figure. Base is 7 centimeter and this is altitude or height, that is 4 centimeter. In first part 7 centimeter and 4 centimeter. Look at the solution of this question. Find the area of the parallelogram. Area of parallelogram means base multiplied by height, whereas base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. Multiplication of these two numbers 28 centimeter square, because this is area and we have to write the answer in unit square. Second B part is base is 5 centimeter and area is height is 3 centimeter. Base 5 centimeter and height 3 centimeter. In this question we will find area of parallelogram like this: base multiplied by height, 5 multiplied by 3, 15 centimeter square. Look at the C part of figure of the C part. Base is given 2.5 centimeter and height is 3.5 centimeter. Base 2.5, height 3.5, area multiplication of these two numbers 8.75 centimeter square. Answer should be in centimeter square. D part, base is given 5 centimeter and height is given 4.8 centimeter. Area of parallelogram is base multiplied by height, 5 multiplied by 4.8. Answer is 24 centimeter square. Last part of this question, E part, base is given 2 centimeter and height is 4.4. This is base and height which is making 90 degree with the base, that is 4.4 centimeter. Base 2 centimeter, height 4.4. तो area of parallelogram हो गया base multiply by height, multiplication of these two numbers 8.8 centimeter square. Now you have to, in next question, find the area of the following triangles. In second question, some triangles are given. You have to find the area of the triangles. Look at the first triangle. Base is 4 centimeter and height is 3 centimeter. The line segment which is making 90 degree with the side base, that is called height. So height in this question is 3 centimeter. Base is given 4 centimeter. Height is equal to 3 centimeter. Area of triangle formula है half into base into height. Half into base means 4 centimeter, height means 3 centimeter. I will cut 2 ones are, 2 twos are, 2 threes are, 6 centimeter square is the answer. Now look at the B part. B part, base is 5 centimeter, that is base, or height 3.2 centimeter. Why? It is making 90 degree angle with base, that's why 3.2 is height. Look at the solution of this question. Base is 5 centimeter, height is 3.2 centimeter. Area of triangle is half into base into height. Half into base means 5. Height, I will remove decimal of this number 32 by 10. Cancel करने के बाद I will get 8 centimeter square. That is the area of the triangle. C part, base is, I will show the figure first. Base is 3 centimeter and height is 4 centimeter. Base is 3, height is 4. Then how I will find out the area of triangle? Half into base into height. I will cut 2 ones are 2, 2 twos are 4, 3 twos are 6 centimeter square is the answer. D part, again look at the figure first. Base is 3 centimeter and this is height outside the triangle. ये हाइट है, इस बार ये आउटसाइड द ट्राइंगल है एंड मेकिंग 90 डिग्री विद द साइड बेस, दैट्स वाई इट इज हाइट 2 सेंटीमीटर. तो बेस हो गया 3 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 2. आई विल कट 2 by 2, ओनली 3 इज लेफ्ट, सो आंसर इज 3 centimeter square. We will do 3 questions in this video. So third question is find the missing lengths values. You have to find the missing values of the given questions. There are 4 parts. In some parts base is given, you have to find height with the help of area, and sometimes height is given, you have to find the base with the help of area. I will show you the solution. For third question, base is given 20 centimeter, area of parallelogram is given.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. आई विल यूज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह आई विल यूज 246. इट इज गिवन इन योर बुक. बेस की जगह आई विल यूज 20 सेंटीमीटर. इट्स ऑल्सो गिवन इन योर बुक एंड हाइट इज नॉट गिवन. सो आई विल राइट h इन प्लेस ऑफ हाइट. सो जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई का है वो वहाँ डिवाइड में हो जाएगा. 246 इज डिवाइडेड बाय 20 to find the value of height. I will cancel all this number. 123 by 10. There is 1 0, so I will put one decimal before one digit from last. So answer is 12.3 centimeter. This is the required height. Height of this question is 12.3 centimeter. Look at the B part. B part में height is given 15 centimeter. Area is given 154.5 centimeter square. You have to find base in this part. Area of parallelogram base multiply by height. I will put all the substitute all the values like area की जगह 154.5 and base is not given. height की जगह 15. so जो नंबर यहाँ multiply में है वो divide में आ जाएगा 154.5 upon 10. students how I will solve this number. I will remove decimal first. मैंने decimal remove किया, नीचे 10 आ गया यहाँ पे. then I will cut in the table of 15 ones are 15, 15 ones are 15, 0, 15 3s are 45, only 103 by 10 is left. so I will convert into decimal. और एक ज़ीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा फ्रॉम लास्ट. सो आंसर विल बी 10.3 सेंटीमीटर. सी पार्ट इज हाइट इज गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन. आई विल यूज द फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 48.772 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेस मल्टीप्लाई बाय 8.4 इज इक्वल टू 48.72. बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा. हाउ आई विल सॉल्व दिस नंबर. आई विल रिमूव डेसिमल फर्स्ट. यहाँ से डेसिमल हटाया, देयर आर 2 डिजिट विद आफ्टर डेसिमल, सो आई विल पुट 100 हेयर. और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा. न्यूमिनेटर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आया. डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव किया तो न्यूमिनेटर में 10 आया. देन आई विल कट 10 बाई 10. देन आई विल कट 12 की टेबल में 7 1 और 406 फिर 7 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है 58 पर. 58 बाई 10 इज लेफ्ट. सो द आंसर इज 5.8. आई विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस 15.6 दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड हाइट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 16.38. 15.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 16.38. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट आई विल कट. आई विल रिमूव डेसिमल फर्स्ट. इसका डेसिमल रिमूव किया 100 नीचे आ गया, इसका डेसिमल रिमूव किया 10 ऊपर आ गया. देन आई विल कट 10 बाई 10. मैंने 6 की टेबल पे कट किया पहले इसको दोनों नंबर को. देन आई विल कट इन द टेबल ऑफ 13 की टेबल पे कट किया. 13 2s और 13 1s. नाउ द माई आंसर इज 21 बाई 20. 21 बाई 20. और जब इसको सॉल्व किया तो आई विल गेट आंसर 1.05 सेंटीमीटर. That's all for today. You have to complete first, second and third question of exercise 11.2 in your registers. Thank you and have a nice day.